Good morning, students. In today's science class, we are going to start chapter Combustion and Flame. So, in our day-to-day life activities, we are using number of fuels for various purposes. Like we are using LPG in our homes. LPG को हम use करते हैं liquefied petroleum gas that is used in cylinders, and we use it as for domestic purpose to cook the food, okay, and to run our vehicles. पेट्रोल डीजल इन सब का यूज किया जाता है, सीएनजी. ओके, सो first we are going to study about combustion. What do you mean by combustion? So what do you mean by combustion? It is a process जिसमें सब्सटेंस को बर्न किया जाता है to produce heat and light. ओके, किसी भी सब्सटेंस को बर्न किया जाता है, और बर्निंग जो है इट ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. ओके, सो अ प्रोसेस इन विच a substance reacts with oxygen. Substance reacts with oxygen means react कर रहा है, means वो burn कर रहा है to give off heat, और उससे heat और light जो है वो produce हो रही है. So this process is known as combustion. Okay, so what do you mean by combustion? इसमें substance जो है वो burn हो रहा है to produce heat and light. Burn हो रहा है means substance जो है that reacts with oxygen. Okay, so now the substance that is reacting with oxygen or that is burning, उस substance को हम क्या बोलते हैं? Combustible substance, because that substance is undergoing combustion. उनका combustion हो रहा है, वो burn हो रहा है to produce heat and light. So that substance is called combustible substance, and it is also called a fuel. Okay, so combustion क्या है? जिसमें substance जो है, it is a process जिसमें substance जो है वो react कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, means burning is taking place to produce heat and light, and the substance which is that undergoes combustion, जो burn कर रहा है, उस substance को हम combustible substance कहते हैं, and it is also called a fuel. Now fuel को we have classified into three types of fuel हैं. Solid fuels भी होते हैं, liquid भी होते हैं, and gaseous fuels भी है. Solid fuels का example you can give wood. Wood is also a fuel. Why? Because when wood reacts with oxygen, means when burning takes place, wood जो है वो burn होती है, combustible है, तो it is called a fuel, and it is in solid state, to solid fuel. Liquid में petrol is there, diesel is there, so these are liquid fuels. They get burned easily. Gases में there are LPG and CNG. LPG stands for liquefied petroleum gas, and CNG stands for compressed natural gas. Okay, but some substances are there that does not undergo combustion. Mean वो combustion उनका होता ही नहीं है. That do not get burned. वो burn होते ही नहीं है. Okay, so those substances are known as non-combustible substances. Okay, so combustible substances are those substances that undergoes combustion, and they are also called fuels, and non-combustible substances that do not undergo combustion. Now here in this table it is written the which substance is combustible and which is not. Sand जो है वो non combustible है, it does not get burned. Petrol combustible. Paper, it also gets burned easily to produce heat and light. Stone, it is non combustible, that does not get burned. Wood combustible. Straw combustible. Coal, it is also combustible. Coal you have seen, जो आयरन मैन होते हैं, प्रेस करते हैं धोबी, उनके आयरन में कोल इज देयर. ठीक है, वो कोल होता है, वो ब्लैक सॉलिड मटेरियल, दैट इज कोल. दैट आल्सो गेट बर्न एंड प्रोड्यूसेस हीट, बट इसका फ्लेम नहीं होता है. ओके, क्लोथ, इट इज आल्सो कंबस्टिबल. ग्लास, it is non-combustible. LPG, it is combustible. Okay, so here it is a list of materials that are combustible and non-combustible.
The next is air is necessary for combustion. How can you say that the air is necessary for combustion? We have right now we have studied that combustion is a process in which a substance reacts with oxygen. Reacts with oxygen means burning taking place, and which gas support combustion? Oxygen gas. How can you prove that? You can take a candle, okay, lit a candle, matchstick, so you can lit the candle, okay, now see the candle is burning. So this is combustible material, okay, and here in this case in figure B part, what you have done, you inverted a glass jar over it. आपने जो है ग्लास जार उसके ऊपर उल्टा करके इसको रख दिया. So you will observe कि पहले तो कैंडल फ्लेम it was there, but धीरे धीरे वो फ्लिकर करता है and it goes off, और वो बिल्कुल जो है it goes off means बिल्कुल खत्म हो जाता है, बिल्कुल कैंडल जो है वो बुझ जाती है. So candle stops burning. Okay, so why it is happening? Because when you inverted a glass jar over it, now there is no air present inside it. No air means no oxygen is there. Therefore, the candle stops burning. It means the air is necessary for combustion. Okay. Now, we will study the conditions necessary for combustion. What are the conditions that are necessary for combustion? First is presence of combustible substance. अगर आपने substance ही ऐसा ले लिया जिसको आप burn कर रहे हैं and that is non-combustible. Suppose you have taken a stone. आपने stone लिया, अगर आप उसको burn कर रहे हैं तो उसका combustion होगा ही नहीं. तो combustion के लिए the substance should be combustible. So presence of combustible material and presence of oxygen gas. अगर oxygen gas ही नहीं है तो combustion will not take place. Okay, and the last condition is proper ignition temperature. So now what do you mean by ignition temperature? तभी आपने सुना है कि फॉरेस्ट में जो है वो अपने आप फायर जो है वो लग जाती है. Why it happen? क्यों होता है ऐसा? And suppose you have a piece of paper, आपके पास एक पेपर पीस है and secondly you have a table of wood. अगर आप दोनों में से मैचस्टिक की हेल्प से अगर आप बर्न करना चाहते हैं तो your paper will get burned easily, but the table made of wood, it will not get burned with the help of matchstick. Why? कोई भी सब्सटेंस तब तक नहीं बर्न करता चाहे वो कंबस्टिबल ही है. कंबस्टिबल सब्सटेंस को बर्न करते हैं एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, बट कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का भी अपना अपना टेम्परेचर होता है जिसपे वो फायर को कैच करते हैं. Okay, like I have shown you in a figure. See here, dry leaves are there, and in this figure, fresh green leaves are there. So fresh green leaves में moisture का content होता है, water होता है, moisture होता है, and dry leaves में there is no moisture. और ये dry leaves जो है वो burn कर जाती हैं easily. Green leaves जो है वो burn नहीं करती easily. Why? क्योंकि ड्राई लीव्स का जो है टेम्परेचर इट रीचेस टू दैट टेम्परेचर एट विच इट कैच फायर इजीली. ये बहुत जल्दी उस टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, इनका जल्दी टेम्परेचर आ जाता है जिसपे वो फायर को कैच कर लेते हैं. मीन्स इसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन मीन्स एट विच इट कैच फायर इजीली, इसका इग्निशन टेम्परेचर इज लो. एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द ग्रीन लीव्स, इनका ignition temperature is high as compared to the dry leaves, therefore it does not get burned easily. Okay, so ignition temperature, what is the definition of it? It is the lowest temperature. Ignition temperature क्या है? It is the lowest temperature at which a substance catch fire easily. Okay, so इसका lowest temperature जिसपे वो fire catch कर रहा है तो इसका वो ignition temperature हो गया. And dry leaves का ignition temperature is low as comparison to the green leaf. Okay, now you can do one activity at your home. Activity is given in your book. You can take a 2 glass paper cup. ठीक है, पेपर कप्स में आप पेपर कप को बर्न करेंगे तो वो इजीली बर्न हो जाएगा. ठीक है, एंड सेकेंडली आप सेकेंड पेपर कप में क्या करेंगे, यू विल पॉर वाटर इनटू इट. आप थोड़ा सा उसमें पानी डालिए एंड देन keep it over the flame. उसको थोड़ा सा फ्लेम के ऊपर रखिए. It will not get burned. Why? Because that heat
इज यूज्ड अप बाय द वाटर, जो कि उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, वो हीट उसमें यूज हो रही है और वो पेपर कप का इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पहुंच नहीं पा रहा जिसके जहां पे वो फायर को कैच करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दैट पेपर कप डज नॉट गेट बर्न। ओके, so ignition temperature of dry leaf is low and ignition temperature of green leaf is high as compared to the dry leaf. Now कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, मतलब वो एकदम से फायर को कैच कर लेते हैं, बहुत इजीली फायर को कैच करते हैं। सो दो सब्सटेंसेस आर हाईली इन्फ्लेमेबल, हाईली इन्फ्लेमेबल। एल्कोहल है, सैनिटाइजर्स है, उनमें अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड पेट्रोल, perfumes, they are highly inflammable. Why? Because they have very low ignition temperature, वो easily fire को catch कर लेते हैं। और जो substances easily fire को catch करते हैं उनका ignition temperature is low. Okay class, so that's all for today. Thank you class and have a nice day.